আমার আইডিতে লক কপি লিংক করে আমার হোয়াটসঅ্যাপে করে Main lebu. Lebu kok? Iya deh. Main. Mau jangan. Aja na. হেডসেটের মোবাইলটা নিয়ে তো বলবো আপনার মোবাইলটা চাইলে পুরোনো মোবাইলটা অফিস আছে বলে আপনার মোবাইলটা পুরোনো মোবাইলটা চাইলো अरे 8 मिनट सर अरे 8 मिनट Mahfouz of class 10, please come on the stage and deliver a very short speech on the eve of 26th January. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So first of all, I would like to wish you a very happy Republic Day. So today is a very auspicious day for us. It's a very auspicious occasion for all of our Indians, for all the people of the country, for all the citizens of the country. So we got independence on 15th August 1947, but we drafted our constitution after 2 years, 11 months and 18 days on 26 January 1950. So it was very important for us to draft a constitution because it was necessary to control the people of the country, to maintain the discipline in the country. And let me make you understand that discipline in life is very important. You can achieve success by maintaining the discipline, and it's a very hard job. It's a very hard task. One who maintains disciplines properly will definitely achieve success, will definitely achieve great. So on this day, we should remember the sacrifices of our ancestors, of our freedom fighters, of our national leaders, those who sacrificed their lives just for the sake of this country. So as an Indian, we should honor those leaders, those freedom fighters. But we got freedom, but it's not the last, it's not the end. We are the students who are the builder of this country. So lastly, I would like to tell all the students, please work hard, please work for this country, do something big. So thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for your valuable speech. Alhamdulillah, now we'll start our short program, and I will request our beloved student named Anas to recite a qiraat. Please come on the stage.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now, Bangla medium student, you can go for your tiffin. On the right side, ওখানে জায়গা দিয়ে বাংলা মিডিয়াম তোমরা তোমাদের টিফিনটা করে আসতে পারো। Only hostel student. Teacher, please guide them. They will go by making line. Except Atif and Atikul, you don't go. Atif আর Atikul তোমরা যাবে না। Now, our next performance, Sheikh Khalid sir will be as a convener for performing a short drama on the basis of fundamental rights. As after struggling for a long period, we got our constitution, and for a responsible citizen, how does the people get a short drama on fundamental rights? So please, our convener Khalid sir and their performer Mubarak and his group, please come on the stage. हर बातचीत Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy Republic Day. We already know we are celebrating our 76th Republic Day. It is our national festival. So at this great occasion, we have made a plan to show you a dramatic show on the basis of our fundamental rights. Because we already know today we celebrate because our constitution has approved and completed and accepted. That's why related to this occasion, in short time we tried, our students, they have done a hardship struggle, and the result of struggle you can view, you can observe, inshallah. Without any wasting time, we are going to present our dramatic show. So I request all of you to come and enjoy our drama. I will request our all participants, characters of this drama, according to your situation, your serial, you take your position. Firstly, we'll see it, right to equality, right to freedom,
मुझे पता चला, ठीक है। हेलो माइक चेक। हाँ यूट्यूब लाइव कर दे। मैं लाइव पे यूट्यूब लाइव कर दे। We already know we have 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion and cultural and educational rights, and number 6 is right to constitutional remedies. So let's start. Our fundamental right number 1, right to equality on the based on article number 14, समानता का अधिकार. It is being presented right now. क्या रे लंगड़े, तू मेरे रास्ते से आ रहा है? जानता है ये मेरा इलाका से गुजरता है ये रास्ता। तू मेरे रास्ते से कैसे आया? देख लंगड़ा है। क्यों भाई हमको क्यों मार रहे हो? देख लंगड़ा है फिर भी मेरे रास्ते से आ रहा है। क्यों भाई, मैं लंगड़ा हो तो क्या हुआ? मैं भी तो इस देश की एक नागरिक हूँ। तू नागरिक है लेकिन तू लंगड़ा है, तू इस रास्ते से नहीं जा सकता। क्यों, अल्लाह ने मुझे तो लंगड़ा बनाया है, तो मेरा यहाँ पर क्या कसूर? कसूर वसूर मुझे नहीं पता, तू इधर से नहीं जा सकता, समझा? अरे भाई बेचारे को क्यों मार रहे हो? आप कौन होते हैं जाने वाले? ये मेरे रास्ते से जा रहे हैं। भाई मानता हूँ कि आप ठीक ठाक हैं, वो बेचारा लंगड़ा है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। हाँ तो एक ही देश के नागरिक हैं, और हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक देश है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान ने हमें चाहे लंगड़ा हो या अच्छा हो सबको बराबर का हक दिया है। और ये कहता है, ये कहलाता है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। Now our fundamental right number 2, right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार, based on article number 19. It is being presented down now. पापा हमारी स्कूल से सुंदरवन टूर ले जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना पापा। चल हट यहाँ से, टूट जाएगा। अगर तू टूट जाए तो घर का रोटी कौन बनाएगा? क्या था मेरा बेटा? वो दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। तो क्या हुआ मेरा बेटा? हमारे स्कूल से एक टूर ले जा रहे हैं सुंदरवन, तो कुछ पैसे चाहिए थे। कितना मेरा लाल? 10,000। ये ला मेरा बेटा, पूरा 20,000। ठीक है पापा ये क्या, भैया को पैसे दिए मुझे नहीं दिए? एक बात समझते नहीं, तू एक लड़की है। क्यों बेटा, क्यों रो रही हो? पापा भैया को पैसे दिए मुझे नहीं दिए, मैं भी तो उनकी संतान हूँ। ये तो ठीक कह रहा है, एक ही के संतान है, बेटा हो या बेटी दोनों समान है, दोनों को स्वतंत्रता की आजादी है। आप माना कि आपकी बेटी है वो बेटा है, आपने उनको 10 के बजाय 20,000 दे दिए, और बेटी को तो कुछ नहीं दिया, डांट दिया। आपकी संतान है तो आपको पता होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, और संविधान ने हमें स्वतंत्रता की आजादी दी है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सब आजाद हैं, स्वतंत्रता की आजादी है। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। Our fundamental right number 3, right against exploitation. Rights against exploitation, शोषण के विरुद्ध अधिकार। It is based on article number 23. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा। अरे ये क्या कर रहा है तू? यहाँ पर झाड़ू लगाने बोला तेरे को, तू यहाँ पर गाना गा रहा है? लगा तो रहा हूँ। अरे कहाँ लगाया है यार? तो ठीक से सफाई नहीं किया और तू ऊपर से गाना गा रहा है। तेरे को गाना गाने कौन बोल रहा है? हाँ, तू गाना गाएगा? यहाँ पर ठीक से साफ सफाई कुछ नहीं किया तूने। क्यों भाई, बेचारे गरीब को क्यों मार रहे हो? अरे तू कौन है बोलने वाला? ये मेरा नौकर है, मैं से चाहूँ तो पीटू मारू, ये मेरा मर्जी। ये मेरा टुकड़े में पलता बड़ा है और इसे मैं सैलरी देता हूँ जिसे उसे घर वर चलता है। माना कि आप अमीर हैं, आप ऑनर हैं, ये बेचारा सर्वेंट है, ये एम्प्लॉय है, लेकिन बेचारे की एज क्या है अभी? या बिलो 14 है। आप जानते हैं आपको जेल की रोटी भी खानी पड़ सकती है। जेल की। आप ऑनर हैं और ये आपका एम्प्लॉय है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इसके साथ शोषण करेंगे। हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, यहाँ चाहे अमीर हो या गरीब, सबको राइट दिया है। हमारे फंडामेंटल राइट नंबर 3 आप जानते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अत्याचार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या शोषण? शोषण के विरुद्ध अधिकार। Let's enjoy our fundamental right number 4, right to freedom of religion. Right to freedom of religion, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। It is based on article number 25. अल्लाहु अकबर, बोले कि मुस्लिम अजान दे रहा है। अल्लाह। अरे अजान दे रहा है, चल देखता है। अजान मदन नहीं है, चल बैठ। बैठना। अरे भाई तुम हम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन रे तू? तेरा बटपटी चलेगा क्या हम लोग नहीं नमाज पढ़ सकते हैं? पर मस्जिद में अल्लाह की इबादत करना, तो हम लोग इबादत नहीं कर सकते क्या? नहीं होगा, चल भाग। क्या रे तू मार रे क्या? ज्यादा इबादत नहीं रखना। भाई आप लोग क्यों लड़ रहे हो? हमारा पार्क है, हम इबादत करेंगे। वो कौन है बीच में आने वाला? भाई माना के पार्क है, लेकिन किसी का तो ये सार्वजनिक है, गवर्नमेंट पार्क है। ये मुसलमान है, नमाज पढ़ेंगे, आप हिंदू है, पूजा पाठ करेंगे। इसमें लड़ने की कौन सी बात है? लड़ने की कौन सी बात है? हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, यहाँ पे एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ ये संविधान से चलता है। संविधान ने हमको राइट दिया है कि हिंदू है पूजा पाठ करे अपने हिसाब से, मुस्लिम है तो नमाज पढ़े अपने हिसाब से, कोई किसी में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारा फंडामेंटल राइट नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। Our fundamental right number 5, cultural and educational right. Right, cultural and educational rights means संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। It is based on article number 21A. It is being presented right now. अरे तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों, मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। तू और यहाँ तेरा बाप क्या करता है? मेरा बाप एक किसान है। किसान? तू यहाँ पर पढ़ना आया है, वो भी एक मुस्लिम किसान, गरीब किसान का लड़की। माना कि मैं गरीब हूँ, पर मैं इस्लामिक कल्चर को निभाती हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। तू जानता है हमारे स्कूल का सैलरी कितना है? तू सैलरी भर पाएगा? हाँ, मैं भर पाऊंगी। शिक्षा तो अमीरी गरीबी नहीं देखती है, मुझे भी हाई एजुकेशन प्राप्त करने हैं। मैं डॉक्टर बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। क्या तू और यहाँ हम अमीरों के स्कूल में नहीं, तो यहाँ पर नहीं कर सकता। स्कॉलरशिप मिलता है मुझे, मैं उसी स्कॉलरशिप से पढ़ूंगी। नहीं, तू एक गरीब किसान की लड़की है, तू भी एक लड़की है, तू यहाँ पर नहीं पढ़ सकता। तो भाई बेचारे गरीब बच्ची को क्यों डांट रहे हो? देखिए, ये एक मुस्लिम गरीब किसान की लड़की है, वो भी हमारे यहाँ अमीरों के स्कूल में पढ़ने आ रहा है। ठीक है, माना कि आप अमीर हो, आपके पास पैसा है, लेकिन ये एजुकेशन प्राप्त कर, एजुकेशन तो अमीरी गरीबी नहीं देखती है। आपको पता होना चाहिए, हम सबके सब चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक ही देश के नागरिक हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नंबर 5 वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार।
Next, our fundamental right number 6 and N. It is our संविधानिक उपचारों का अधिकार. संविधानिक उपचारों का अधिकार based on article number 32. It is being presented right now. Right to constitutional remedies. कहाँ जा रहा है? घूमने जा रहा हूँ. हेडलाइट ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रही है. तुम्हारा हेलमेट किधर है? नहीं पहना. तुम्हारा चालान कटेगा. तेरा चालान तो मैं ही काटूंगा. तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं एक नेता का बेटा हूँ. तू नेता का बेटा या कोई और का? चालान तेरे में काटूंगा आज. एक फोन करूँ क्या? एक फोन से तेरी नौकरी भी चल सकती है. चल पैसा निकाल. नहीं पैसा निकालूंगा. निकाल. निकाल लेगा. नहीं निकालूंगा. अरे भाई पुलिस वाले से क्यों उलझ रहे हो? सर देखिए, इसने एक साथ दो गलती किया है. एक तो इसका हेलमेट नहीं है और दूसरा रेड लाइट फॉलो नहीं कर रहा है. ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है. आप जानते हैं कि हमारे लिए हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं. हिंदुस्तान हमें संविधान दिया है और संविधान को फॉलो करना मानना हमारा कर्तव्य है. और जो इसको नहीं मानता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है. इसको जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है. हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट नंबर 6 आपका जो है मौलिक संविधानिक उपचारों का अधिकार. क्या अधिकार? संविधानिक उपचारों का अधिकार. संविधानिक उपचारों का अधिकार. Dear audience, it was our little show based on our fundamental rights. So I will request all our national citizens that we must have, we take care of our rights and follow it in every step of our life, because we can able to give another's rights and we can take our rights, proper rights. Because if we want to success, anyhow we have to maintain discipline, and without maintain constitution we can't get achievement our discipline. So at last, at a time, I want show all fundamental rights. So I request fundamental right number 1, right to equality. We are going to show all rights together. Right to equality, right to freedom, right to equality, right to freedom, and right number 3. Everybody, I will request you come and stand here. Right to equality, right to freedom, and your right against exploitation, right to discipline, our right to freedom of religion, and cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Our 6 fundamental rights you are observing, you are being together. These are Constitution of India. Now in Hindi we are going to show भारत का संविधान समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार. So in this short drama, by this short drama, our students just try to show you our fundamental rights, and our purpose is only one, to awareness, लोगों को जागरूक बनाना. Because when we will aware towards our rights, then we can take our rights from others, and we will be able to give others proper right. So thank you. Wassalam. Now let us go to our places. Now we have concluded our drama. Now next we'll
we will start the introduction of newcomers. First, I will call Osman Hussain of class 1 to come on the stage and introduce himself. Osman Hussain of class 1, come on the stage. हेलो Assalamualaikum. My name is Uthman Hussain. My father's name is Kamut Hussain. I came from Uttarpara. I read in class 1. My school name is Islamic Novel School. My aim in life is to become a doctor. Assalamualaikum. Next, Abaidur Rahman of class 2. Please come on the stage. Abaidur Rahman of class 2. Assalamualaikum. My name is MD Obaidur Rahman. My father's name is MD Tohidur Rahman. I came from Dabkai. I read in class 2. My school name is Islamic Novel School. My aim in life is to become a doctor. Assalamualaikum. Next, Ibrahim Sheikh, class 3. Ibrahim Sheikh, class 3, please come on the stage. Assalamualaikum. My name is Mohammad Ibrahim Sheikh. My father's name is Mohammad Sukurullah Sheikh. I came from Dabkai. I read in class 3. My school name is Islamic Novel School. My aim in life is to become a doctor. Assalamualaikum. Next, Joel Ahmed of class 2. Please come on the stage for your introduction. Assalamualaikum. My name is Joel Ahmed. My father's name is Sawanat Islam. I came from Saktipur. I read in class 2. My school name is Islamic Novel School. My aim in life is to become a professor. Assalamualaikum. Next, Amir Badsa, class 3. Please come on the stage for your introduction. Amir Badsa. Next, Taslimuddin Sheikh of class 2. Taslimuddin Sheikh of class 2, please come on the stage for your introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tasmin. My father's name is Saiful Alam. I come from Lokpur. I sit in class 1. My school name is Islamic Novel School. My aim in life is to become a good human. Assalamualaikum. Next, Abid Hussain of class 1. Please come for your introduction. Abid Hussain. Assalamualaikum. My name is Abid Hussain. My father's name is Motibur Rahman. I came from Polananga. I read in class 1. My school name is Islamic Novel School. My aim in life is to become a doctor. Assalamualaikum. MashaAllah. Very nice introduction. Next, I will call MD Aryan Sheikh of class 3 for his introduction. Assalamualaikum. My name is MD Aryan Sheikh. My father's name is MD Jorullah Sheikh. I came from Sulwadanga. I read in class 3. My school name is Islamic Novel School. My aim in life is to become a doctor. Assalamualaikum. Walaikum Assalam. When students are giving you salam, all the guardians, students, please reply with your salam.
Next, I will call Asikul of class 3 for his introduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Asikul Sheikh. My father's name is Azizul Sheikh. I came from Dak Bangla. I read in class 3. My school name is Islamic Nobel School. My aim in life is to become a doctor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, very nice introduction. Next, I will call Imran Abbas of class 2 for your introduction. Students are requested to give the salam of your friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Imran Abbas. My father's name is Atiyar Rahman. I came from Belnanga. I read in class 2. My school's name is Islamic Nobel School. My aim in life is to become a teacher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Next, Farhan Sheikh of class 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Farhan Sheikh. My father's name is Fulfasar. I came from Sahadatpur. I read in class 1. My school name is Islamic Nobel School. My aim in life is to become a teacher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Next, Tasneen of class 1, please come for your introduction. Tasneen. Next, Anasuddin of class 1, come for your introduction. Assalamu alaikum. My name is Anasuddin. My father's name Akmaluddin. I come from Lalgola. I read in class 1. My school name is Islamic Nobel School. My aim in life is to become a teacher. Assalamu alaikum. Next, Taslimuddin, come for your introduction. Assalamu alaikum. My name is Taslimuddin Sheikh. My father's name is Ashaduddin Sheikh. I came from Kandi. I read in class 2. My school name is Islamic Nobel School. My aim in life is to become a doctor. Assalamu alaikum. Thank you for all the little kids for your introduction. Now we will start a short speech on the basis of 26 January, and we have few contestants who will perform their valuable speech. So please, first up I would like to call Saad Nadeem of class 8 to come and deliver your valuable speech on the eve of 26 January. আমাদের 10টা থেকে আমাদের 10টা পর্যন্ত সাদাদিন কই দেখছ না কই তো আসে না কেন টাইম নাই তোমাদের 12 মিনিট টাইম আছে নেক্সট আব্দুল মুতালিব প্লিজ কাম আব্দুল মুতালিব অফ ক্লাস 8 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to everyone, respected audience, and the teacher, and honorable guest, and all my dear friends. Those who present here on the occasion of 76th Republic Day of India. I an honor to stand before you today. We gather to celebrate 76th Republic Day of India that fills our hearts with pride and gratitude. On this day, in 1950, India took a step towards becoming a modern, independent nation.
by adopting its constitution. This day is a reminder of the hard work and vision leaders like Dr. B.R. Ambedkar, who is an architect of Indian Constitution. Our Constitution is a unique document. It guarantees us the fundamental rights like right to equality, the right to freedom, the right of education, while reminding us of our duties as a citizen. And it teaches us the importance of democracy and ensure that every voice in our country is heard. But Republic Day is not about celebrating our past, but also reflecting on our present and future. And it is also a time to honor the sacrifices of the people who fought for our independence. The leaders like Jawaharlal Nehru and Sarojini Naidu dreamed of an India that on the Republic Day. Assalamu alaikum warahmatullahi. Next, Asif Ansari of Class 8. Please come for your valuable speech. Asif Ansari of Class 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक और मेरे सहपाठी सभी को गणतंत्र दिवस में शुभेच्छाएं। आज हम एक ऐसे दिन वर्ण करने के लिए एकत्र हुए हैं जो न केवल अंग्रेज पर हमारी जीत का प्रतीक है, बल्कि वो हमारे लोकतंत्र भावना को भी जीत का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस का पर्व हमें राष्ट्र में ऊंचा बल ले जाता है। 26 जनवरी 1950 को इस पवन धरती पर हमारे अपना संविधान अपनाया, जहाँ करोड़ों देशवासी को एकता, समानता और बंधुत्व को सूत्रों में पिरोया था। आज हम एक ऐसे दिन मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस दिन उन अनगिनत संतरत्ना सेनानियों को बलिदानों का, जिन्होंने अंग्रेजों को सऊदियों की गुलामी से मुक्ति देने की याद देती है। आज हम कब से कह सकते हैं, हम एक लोकतंत्र करना चाहिए जहाँ हर नागरिक का विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जहाँ न्याय सबके लिए समान है। संतरत्न को बचाने रखना हमारी जिम्मेदारी है। गणतंत्र का दिन पहले राष्ट्रगान का नहीं है, बल्कि वो हमारी प्रमाण क्षण है। जब हमने 75 साल पहले हमारे गणतंत्र का स्वरूप बना था, हमारे प्रभावी मूर्ति को तराशने का हथियार था हमारा संविधान। वो दस्तावेज जिन्होंने हमें नया एकता, समानता, बंधुत्व को पैदा किया था। संविधान वो प्रमुख स्तंभ है जो हमने लोकतंत्र को अंतर्गत से निकलकर संतरत्न को उजाला में ले आता है। थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो बच्चे, हेलो 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 बच्चे, हेलो 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 बच्चे, हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो बच्चे, हेलो बच्चे, हेलो हेलो बच्चे, हेलो बच्चे, 1 2 3 इधर बच्चे, इधर बच्चे ना, हेलो बच्चे, हेलो 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 बच्चे, हेलो हेलो बच्चे,
हेलो माइक चेक हेलो ठीक है हेलो करो ছিল এটা हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो Next I will call Saad Nadeem of class 8 for your valuable speech. Saad Nadeem of class 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to my respected teachers, my dear brothers and sisters, and my lovely classmates. I welcome all of you with my core of my heart. I am Saad Nadeem of 8th standard, is standing before you to highlight the issue of celebrating Republic Day. At first, we all remember our great leader for Constitution, the father of Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, who worked tireless to afford equality, liberty, justice, democracy in India for every people, from every religion, caste, gender, society, etc. Furthermore, we all know that we celebrate this day as a Republic Day because it is a day, 26 January, Indian Constitution in 1950 Act with 395 articles in India to afford right and opportunity to every people in India. This year is marked as the 76th Republic Day in our country. The journey of becoming Republic Day was not easy. It took 3 years from 1947 to 1950 to make this country as a Republic country. It is a day that fills every Indian heart with full of pride and patriotism. As students, an important role to play. Our education was not for your personal growth, but also for the development of the society. Let us pray together. We should respect the laws, helping each other, and moving to the bright future. On this Republic Day, let us dream big, work hard to make the country as a strong, united, and prosperous country. At last, let us remember the order of Mahatma Gandhi to find yourself, include yourself in the service of others. Thank you everybody for your attention. At last, happy Republic Day to every guardian, teachers, my brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Next, Noor Afsan Firdaus of class 5, I will request her to deliver her valuable speech. So please, Noor Afsan, come on the stage. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरा नाम नूर अफसन फिरदौस है। मैं कक्षा 5 की छात्री हूँ। 26 जनवरी के अवसर पे मैं आपके सामने एक छोटा सा भाषण उपस्थित करने जा रही हूँ। गणतंत्र दिवस के मौके पर उपस्थित टीचर्स और माता आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष किया। हम अपने अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं। इस दिन को हम अपने जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का सम्मान करते हुए मनाते हैं। लेकिन आजादी मिलना ही काफी नहीं था, बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक था। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक दस्तावेज रचा जिसने गणतंत्र को एक मजबूत आधार दिया। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महापुरुषों के सूझबूझ और दूरदर्शिता ने हमें प्रकाश का वह स्तंभ दिया जो हमें लोकतंत्र के अंधकार से निकालकर न्याय, समानता और भाईचारे के उजाले में लाता है। 26 जनवरी का यह दिन भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। हमें अपने संविधान का अच्छे से पालन करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने भारत को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। हैप्पी रिपब्लिक डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो বাংলা মিডিয়াম ক্লাস 4 এন্ড ক্লাস 6 যারা আইডি কার্ড পাওনি তোমাদের নির্দিষ্ট ক্লাস টিচারের সঙ্গে দেখা করো।
Bangla medium class 4 and class 6. And class 7, Atif. Please come in the green room. Atif. Next, I'll call Maj Ibrahim of class 4. Please come on the stage for your valuable speech. Maj Ibrahim of class 4. Good morning, respected principal sir, all the teachers, my brothers and sisters, and those guardians came from long distance. I welcome them for my Islamic reading. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Maz Ibrahim from class 4, reading in Islamic Middle School. So today I want to deliver my short speech on the occasion of Republic Day. So today we have gathered here to celebrate the 76th Republic Day. Republic Day is a special occasion for all Indians. It was on this day in 1950 that India adopted its constitution, empowering every citizen with the fundamental rights. India is a land of diversity, with the people with different cultures, religions and languages. Yet we can stay united as one nation. This day reminds us the self-reliance of the freedom fighters and inspire us to serve our nation. On this day, let us celebrate the unity and the strength of our country and take a pledge to respect its diversity and work for its progress. Together, we can build the brighter future for India. Let us promise to contribute the progress of our nation in every way we can. Happy Republic Day to my all Indians, guardians, brothers, sisters. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students are requested, please keep silence. As your friends are performing, please maintain silence. Teachers and volunteers are requested to please maintain the discipline. Next, Yunus Sheikh of class 7, please come on the stage for your valuable speech. Yunus Sheikh of class 7. Next, Rani Hussain of class 4, please come on the stage. Rani Hussain of class 4. Students, please maintain silence. Teachers and volunteers are requested to maintain the discipline. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers and all the students. Today I am Ronnie Hossain from class 4 in Islamic Middle School. Today I am standing here to deliver a short speech on the topic of Republic Day. Good morning everyone. Today we celebrate Republic Day, a day of pride for every Indian. On 26 January 1950, India became a republic, giving power to its people to choose their leaders, and inspires us to serve our nation. As young citizens who should respect our country's values and work to make it stronger, let us promise to contribute to the citizens in every way we can. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Next, Aminur Rahman of class 7, please come for your valuable speech. Aminur Rahman of class 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The respected my director sir, my teachers, and valuable audience and learning from my friends. Today, I am Amin Rahman of 7th standard from INS. As a respectful citizen of India, I stand in front of you to inspire you about today's celebration. Today, we gathered here to celebrate our 76th Republic Day. On this day, 26 January 1950, our India became a democratic republic, sovereign, secular society country by adopting its constitution. A constitution is not just a book of law. It is a foundation of India about its progress, about its democracy. So,
the many leaders who sacrificed their life, their blood to give us this freedom. They achieved this freedom with their blood. It is our time as a student, it is our time to develop our country. It is a historical milestone that reminds us that person who have achieved this freedom, achieved this one with the struggle, with the hard work, with the patience. As like Mahatma Gandhi, Astagfirullah, Nawab Sirajuddaula, Bahadur Sadafar, Nehru Subhash Chandra Bose, many others who have sacrificed their life for this freedom which we are enjoying. As a student, it's our duty. Now let's together develop our country, develop our nation, develop with as a citizen. It is your duty, it's my duty, it is the duty of citizen of India to develop our country. So, as a student, the teachers play a vital role to shaping the mind of a student, and the student are the future of India. Today, it reminds us the struggle days. So let's celebrate this Republic Day. Faith in word, memorize in soul, and there will be a patientful person can do everything. So I am concluding my speech. So let's salute India and enjoy our Republic Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Sakibul Hasan of class 7. Please come. Yunus Sheikh of class 7, please come. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all respected my teachers and my brothers and all the audience, those who are sitting in front of me. I welcome all of you on this glorious occasion of Republic Day. Today, on the occasion of Republic Day, we will celebrating the Republic Day and becoming a democratic republic on 26th January 1950. We will celebrate the 76th Republic Day. This is a day that fills us with happy and gratitude. Our constitution adopted, there are 6 fundamental rights of a constitution. So number 1, right to equality. Number 2, right to freedom. Number 3, right to freedom of religion. Number 4, cultural and educational rights. Number 5, right against exploitation. And number 6, right to constitutional remedies. So Republic Day is not just a celebration, it is a day of reflection. It is a time to think about the progress we have made and the challenges that lies ahead. And India has achieved remarkable growth in various fields, from launching satellites to excelling in sports and technology. But as citizens, we must continue to work together to overcome issues like poverty, illiteracy and inequality. So at last, I am concluding my speech by wishing you a happy Republic Day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Next, Yunus Sheikh of class 7. Good morning everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected my teachers, my brothers and sisters, and all those who are watching to me or listening to me. I welcome all of you on this auspicious day, on this occasion of Republic Day. Today we all have gathered here to celebrate Republic Day of our India. Our India is a democratic country. We know that. But we did not know how India get the democracy, how India set the rules of democracy. Our constitution was laid on 26 January 1950. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, they are some of the pride examples of the leading of constitution. We are Indians. We should feel pride that we are Indians. On Republic Day is not for celebration. It is for feeling an immense pride, and it is for paying a tribute. We should feel sympathy for our freedom fighters.
They are great leaders, great ancestors. Our ancestors taught us many things. We should learn something from them. I think that we should learn from them that never give up. We should always stay back. We should always look in front. Do not to forgive. So at last, I wish all of you a happy Republic Day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam. Now, the English medium has concluded their short program. At last, again, we wish you a very Republic Day. And now I request our colleague, Sahu sir, to continue this program from Ahmed Median. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আমার বক্তব্য শুরুর পূর্বেই আমি যারা টিফিন এখনো খায়নি বা পাইনি তাদেরকে বলবো তোমরা হোস্টেলে গিয়ে টিফিনটা কালেক্ট করে নিতে। আসসালামু আলাইকুম। Respected Principal Sir and honorable guardians in front of me and my dear students and our colleagues. First of all, I would like to wish you all a very happy Republic Day of India. As you know, all we are gathered here to celebrate 76th Republic Day of India. It's a great privilege for us that we stand here, we sit together. Do you know why it is called Republic Day? Why are we celebrating this day? Republic means a country led by Prime Minister or President, the supreme leader of our country. They are elected by, directly or indirectly, by the people. People are the supreme force. If there is no people, no leader will be made. So, main power lies in the hand of people, in the mass. Republic Day, it also means in our country there is no dynasty of kings and queens. Totally driven for the interest of the people of India. And I also want to mention some points. 26th of January, why it is Republic Day celebrated? There is some history behind it. During the era of Indian National Congress in 1930, 30th January, 26th January, they demanded Purna Swaraj, that is complete freedom, and unflagged the national flag for the first time. And thereafter, in 1949, 26th of November, our constitution was adopted. And just 2 months later, in 1950, 26th January, our constitution enacted, that is came into force. And our constitution give us rights and some points out duties, fundamental duties. You know, Republic Day we celebrate is not a very simple day. It's a historical day. It's a national festival. It's a national holiday. It is celebrated all over India today, gorgeously and purposely. Now, we also mention the sacrifice of our heroes
or freedom fighters. They sacrificed their lives for the freedom of India. They obeyed their responsibilities and pointed out some duties for us. It is a time for us to protect our constitution as well as our society. Everybody has a responsibility to protect their family, village, society, and above all country. We feel proud as an Indian. So, once again, I want to wish you, everyone present over here, happy Republic Day of India. Now, our Bengali medium introduction will be begun. First of all, I would like to call upon stage Maimuna Khatun from class 7 for Kirat. Please, Maimuna, come on the dais. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello. Now, may I call upon stage Hina Rabbani from class 7 for Ghazal. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাবা মানে হাজার বিকেল আমার ছেলেবেলা, বাবা মানে রোজ সকালে পুতুল পুতুল খেলা। বাবা মানে হাজার বিকেল আমার ছেলেবেলা, বাবা মানে রোজ সকালে পুতুল পুতুল খেলা। বাবা মানে কাছে ভালো যাচ্ছে ভালো দিন, বাবা মানে জমিয়ে রাখা আমার অনেক ঋণ। বাবা মানে কাছে ভালো যাচ্ছে ভালো দিন, বাবা মানে জমিয়ে রাখা আমার অনেক ঋণ। আমি যত এলো মেলো ভুলের বিধান, বাবা তুমি সময় মতো সহজ সমাধান। জীবনের টানা পড়িন কিছুই না জানি, তোমার মাঝে স্বরলিপি তোমার মাঝে খুঁজি। বাবার কাছে হই না কালো আমি কোনদিনই, বাবা ডাকে আদর করে আমায় সোনামণি। বাবার কাছে হই না কালো আমি কোনদিনই, বাবা ডাকে আদর করে আমায় সোনামণি। বাবা মানে অনেক চাওয়া, বাবা মানে অনেক পাওয়া, বাবা মানে ছোট্ট শূন্যতা, বাবা মানে অনেক পূর্ণতা। চিরদিন থাকবে ভালো তুমি
জীবন ধরে বেলা শেষে তুমি আজও অনেক অভিমানী কেউ না জানুক আমি জানি তোমায় সোনামণি বেলা শেষে তুমি আজও অনেক অভিমানী কেউ না জানুক আমি জানি তোমায় সোনামণি আসসালামু আলাইকুম What a sweet voice and mesmerizing voice. It truly regales our ears. Now, next on, I would like to call upon MD Atif from class 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my great pleasure to introduce myself to you on this very auspicious occasion of Republic Day of India. Respected teachers and beloved guardians, senior and my dear friends, myself MD Atif, born to MD Abdullah, and I am very glad to be here as a newcomer of class 7. In this wonderful, glorious, reputed institution, Islamic Noble School. I hail from Bhavta and previous school name was Berhampur City Public School. I heard a lot about the excellency, pleasing atmosphere, safety and security provided by this marvelous Islamic Noble School from different sources. I was a little bit of dubious minded, but from the first day, a warm welcome and guidance shown by respected DIC Mujahar Mandal 5G sir. And our most respected principal sir, a truly good human being, beacon of education, benevolent person and philanthropist, Dr. M.D. Shariful Islam, were truly praiseworthy and mesmerizing. The most key things is discipline, along with Islamic culture taught by this fabulous school is also commendable. I am very excited to learn and grow in Islamic Noble School. I love to read books during the recess and I am also looking forward to participate in various activities in Islamic Noble School. I hope to hard work, learn, innovate and achieve my dream by guidance of our teachers and friends. Thank you so much for giving me the opportunity to introduce myself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, bye. Thank you so much, Atif, for your wonderful voice and introduction. Now, I would like to call upon the stage MST Nisa Haq from class 7 for English introduction. Please come. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my great pleasure to introduce myself to you on this very auspicious occasion of Republic Day of India. Respected teachers and beloved guardians, seniors and my dear friends. Myself, MST Nisha Haq, born to Mainulak and Rijab B. And I am very glad to be here as a newcomer of class 7 in this wonderful, glorious, reputed institution in Islamic Noble School. I hail from Sargachi and previous school name was Khadija Model Mission. I heard a lot about the extensive blessing, atmosphere, safety and security provided by this marvelous Islamic Noble School from different sources. I was a little bit of dubious minded, but from the first day, a warm welcome and guidance soon by this respected TIC Mujahar Mandal 5G sir and our most respected principal sir, a truly good human being because of education, most benevolent person and praiseworthy. Dr. Muhammad Saiful Islam sir were praiseworthy and mesmerizing. The most key thing is discipline along with Islam culture taught by this fabulous school is also commendable. I am very excited to learn grow in Islamic Noble School. I love to read books
friends. Thank you so much for giving me the opportunity to introduce myself. Assalamu alaikum. Thank you so much. A very good introduction we have had. Now, next on MD Raif Rahman, please come on the stage for your English speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my great pleasure to introduce myself to you on this very auspicious occasion of Republic Day of India. Respected teachers, beloved guardians, and my dear friends, myself, MD Raif Rahman, born to MD Hafizur Rahman and Asma Ahmed. And I am very excited I am very glad to be here as a newcomer of class 9. In this very wonderful, glorious, reputed institution, Islamic Noble School. And Islamic Noble School. And our most Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, I would like to call upon the stage our next contestant, our dear student, Atikul Sheikh, for self-introduction. Atikul Sheikh, come on the stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my great pleasure to introduce myself to you on this very auspicious occasion, Republic Day of India. Myself, Atikul Sheikh, born to Alauddin Sheikh and Uzla Habibi. And I am very glad to be here as a newcomer of class 9 in this wonderful, glorious, reputed institution, Islamic Noble School. I hail from Sajadpur and previous school name was Al-Nur Model Mission. I heard a lot about excellency and pleasing atmosphere, safety, security provided by this marvelous Islamic Noble School. I was a little bit of dubious minded, but from the first day, a warm welcome and the guidance shown by the respected TIC Mujahar Mandal Faji sir. And our most respected principal sir is a truly good human being, beacon of education and most benevolent person, philanthropist Dr. Muhammad Sariful Islam. The most key thing is discipline, along with Islamic culture. This also taught by this fabulous school is also commendable. I am very excited to learn and grow in Islamic Noble School. I love to reading books during the recess, and I am also looking forward to participate in various activities in Islamic Noble School. Thank you for giving me the opportunity.